Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Sabah Ashraf and hope you are doing great. Today we are diving into a crucial aspect of the IELTS reading section, list selection. If you've struggled with this question type or wants to boost your skills, you are in the right place. I'm going to break down what list selection questions are, share effective strategies and provide examples to help you master this in your IELTS preparation. Let's get started. So what exactly are list selection questions? In the IELTS reading test, you will often encounter these questions in the form of a list of options, and your task is to match the given statement or paragraphs with the correct options from the list. These questions require careful attention to detail and a good understanding of the passage. So let's get going to the book and jump into some tips. Tips for list selection. List selection हमारे पास इस तरह से कॉलम में दी जाएंगी, ठीक है. एडिटिंग प्रोसेस, फर्स्ट ड्राफ्ट, चैलेंजेस, बीवेयर, राइटिंग, रीडर्स, फर्स्ट ड्राफ्ट, रिसर्च, ग्लैमर, पब्लिशिंग, अ लिटरेरी एजेंट, समरी, अल्ट्रेशंस, अप्स एंड डाउन्स, प्रोफेशन, रोलर कोस्टर एंड पब्लिशर. इस तरह से हमें यहाँ पर लिस्ट दी जाएगी. यहाँ पर हमें पैराग्राफ की समरी दी जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दी गई है, एनीवन हु वांट्स टू बी अ राइटर शुड बीवेयर. बीवेयर, हमने लिस्ट में से एक वर्ड को एग्जैक्ट जो मैच कर रहा होगा उसको हमने यहाँ पर राइट करना है. So let's get back to the tips, and first of all understand the tips, then solve the passage. First tip, read through the list and prepare paraphrases. Read through the list को आपने अच्छी तरह से इसके वर्ड्स को पढ़ लेना है. एंड प्रिपेयर पैराफ्रेजेस. पैराफ्रेजेस वर्ड्स में वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाता है. तो अगर आप अपने रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग वर्ड्स को आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है. रीड थ्रू द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. रीडिंग के सेक्शन में आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है और आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. कीवर्ड्स जो उससे मिलते जुलते वर्ड्स होंगे उनको आपने हाईलाइट कर लेना है. लोकेट द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको आपने पैसेज में अंडरलाइन करना है. आंसर कम इन द ऑर्डर. इस सेक्शन में भी आंसर्स जो हैं वो सिक्वेंशियल होंगे, नॉन सिक्वेंशियल नहीं आएंगे. आंसर्स आर यूजुअली लेटर. फॉर एग्जांपल, ए जी रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू चेक. मतलब इसमें हमें ए टू जी पैराग्राफ्स दिए जाएंगे. समटाइम यहाँ पर ए बी सी राइट होगा, बट समटाइम अगर नहीं भी है तो आपने पैराग्राफ्स को जल्दी से इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है अंडरलाइन कर लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट गोइंग टू द समरी एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग in the blanks. People often associate writing with dash, but being a writer involves managing conflicting emotions as well as. अब आपने people often associate with किससे जुड़े हुए थे? अक्सर writing with डैश. आपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं करनी है, आपने इससे मिलते जुलते वर्ड्स को फाइंड करना है, फिर हमें आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा. बट बीइंग अ राइटर इन्वॉल्व मैनेजिंग conflicting emotions as well as dash are instinct. Advanced technology contrary to what might appear does not make the dash faster. यहाँ पे अगर उसने faster दिया है वहां पे speed up भी हो सकता है. When a writer has a draft of the text ready, it is good idea to have a dash. अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर singular word आएगा. For friends etc. to look at. If an author is accepted by a publisher, the draft of the book is given to dash. किसको बुक दी गई थी? फॉर वेटिंग, जांच पड़ताल के लिए. डैश आर का मतलब यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड आएगा. देन ऑफन मेड विच आर नॉट इजी फॉर द राइटर टू एग्री. However, dash is compelling. Compelling means compulsion या इस तरह का वर्ड यहाँ से मिलता जुलता यहाँ पर आएगा. Even though there are means यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड्स आएंगे. लेट्स गेट गोइंग टू द पैसेज एंड रीड केयरफुली. सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? पीपल ऑफन एसोसिएट राइटिंग विद dash. Let's find the word people. Yes, people is here. People think that writing as a profession is glamorous. तो हमने लिस्ट में से इससे मिलता जुलता वर्ड फाइंड करना है. Yes, glamour, glamorous और glamour. People often associate writing with glamour.
but being a writer involves managing conflicting emotions as well as meaning and dash are instinct का word find करेंगे, conflicting emotions as well as dash. Okay, let's find the word conflicting emotions as well as dash are instinct. Okay, read the passage carefully. यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. If only it was. So what exactly does writing a book entail? Being a writer is about managing a galaxy of contradictory feelings. Yes, feelings, emotions. Elation, despair, hope, frustration, satisfaction, and depression, and not all separately. Of course, it also involves carrying out detailed research. Yes, research. First, to establish whether there is a market for the planned publication, and second, into content of the book. Sometimes, however, instinct. Yes, instinct word is here. Conflicting emotions हो गए, और यहाँ पर हमने एक और word ऐड करना है. It also involves, वो भी involve था, carrying out detailed research. Yes, research is the right answer. Okay, let's get back to the list and find the word research. Yes, research is here. Yes, research is the right answer. Let's read the third question. Advanced technology, contrary to what might appear, does not make the dash faster. मैंने आपको बताया था कि faster से मिलता जुलता word होगा. Advanced technology, contrary to what might appear, does not make the dash faster. Okay, let's find the word faster या speed, इस तरह का कोई word हमें मिल जाएगा जल्दी से. Okay, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Once the publication has been embarked upon, there is a long period of turmoil as the text takes shape. First draft is rarely the final text of the book. Nearly all books are the result of countless hours of altering and reordering chunks of text and deleting the embarrassing bits. While some people might think that with new technology, yes, technology word is here, the checking and editing process is speeded up. Yes, editing process is the right answer. अब यही word हम list में से find करते हैं. editing process. Yes, editing process word is here. Yes, it's a right answer. Advanced technology, contrary to what might appear, does not make the dash editing process faster. When a writer has a draft of the text ready, it is a good idea to have a dash for friend, etc. When a writer has a draft of the text ready, it is a good idea to have a dash for friend, etc. to look at. So let's read the passage carefully and find the answer. Okay, the experienced writer would hardly agree. Unfortunately, advanced technology now allows the writer the luxury of countless editings, a temptation many of us find hard to resist. Yes, so with passage endlessly, no. Where is the word of writer? Nothing remotely like original and completely of place compared, no. After the trauma of self-editing and looking for hollows, it is time to show the text off to others people. Friends, yes, friends is here. Perhaps for appraisal at this stage, it is not wise to send it off a literary agent or direct to publishers, as it may need further fine-tuning of which the author is unaware. Once an agent has been approved and has rejected a draft publication, it is difficult to go and ask for the revamped text to be considered again. It also helps at this stage to offer a synopsis of the book. Synopsis of the book, if it is a novel or an outline. Outline is the synonym of synopsis. Synopsis is the synonym of draft, and draft is the synonym of summary. Summary, draft, synopsis and outline, ये सारे एक ही वर्ड के synonyms हैं. तो हमारे पास लिस्ट में इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है. If it is a textbook, this act as a guide for the author and a general reference for friends and later for agents. अब हम लिस्ट में से इस वर्ड को फाइंड करते हैं. Yes, summary is the synonym of draft and synopsis and outline. Yes, right answer is summary. When a writer has a draft of the text ready, it is a good idea to have a summary for
friends, etc. to look at. If an author is accepted by a publisher, the draft of the book is given to dash. किसको बुक दी जाती है? For vetting, जांच पड़ताल के लिए. Okay, let's go back to the passage and find the answer. Yes, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Although it is tempting to send the draft to every possible agent at one time, it is probably unwise. Some agents may reject the publication out of hand, but others may proffer some invaluable advice, for example, about content or the direction to be taken. Hints like this may be of use in finally given by a contract of an agent. No. The lucky few taken on by publishers or agents then have their books subjected to a number of readers. Yes, readers is here. Whose job is to vet a book? जिनकी जॉब ही क्या होती है? बुक की जांच पड़ताल करना. Yes, readers is the right answer. लिस्ट में से हमने रीडर का वर्ड हमने फाइंड करना है. Yes, readers. Readers. Yes, readers is here. The draft of the book is given to readers for vetting. Yes. Dash are then often made which are not easy to writer to agree. Dash are then often made which are not easy to writer to agree. क्या चीजें हैं जो राइटर के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है? Let's go back to the passage and find the answer. Okay. After a book has finally accepted by a publisher, one of the greatest difficulties for the writer lies in taking on board the publisher's alteration to the text. Yes, alteration is the right answer. अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं. Yes, alteration are then often made which are not easy for the writer to agree. However, dash is compelling even though there are dash. However, dash is compelling. अब compelling से मिलता जुलता वर्ड हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे. ओके, पैसेज पे जाते हैं. ओके, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. More seriously, the integrity of the text may be challenged, and this may require radical redrafting, which is unpalatable to the author. A book's creation period is complex. No. By the publisher, reworking and text amputation can also be torturous process. For many writers, the most painful periods come when the text has been accepted and the writer is waiting for it to be put together for the printer. By this stage, it is not uncommon for the writers to be thoroughly sick for the text. Abundant writing. Yes, abundant writing. Nonsense. Once smitten, it is not easy to escape. The compulsion means compelling. Compulsion is the synonym of compelling. To create and write. Yes, writing. Write से मिलता जुलता वर्ड हम लिस्ट में फाइंड करेंगे. Yes, writing is here, right? अब हम इसको यहाँ सेट करते हैं. However, writing is compelling even though there are dash. There are यहाँ पर हम कोई प्लूरल वर्ड को राइट करेंगे. There are dash. इसको दोबारा से पैसेज में से वर्ड को फाइंड करते हैं. Despite the roller coaster rides of contrary emotions. तो हम इमोशंस में रोलर कोस्टर राइड्स को राइड नहीं कर सकते, तो हम लिस्ट में से इससे मिलता जुलता वर्ड्स फाइंड करेंगे. अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं, तो देयर इवन दो देयर आर अप्स एंड डाउन्स. अप्स एंड डाउन्स इज द राइट आंसर. रीडिंग के सेक्शन 3 में हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, पर इसमें हमने लिस्ट सिलेक्शन को जल्दी से सॉल्व भी करना होता है. लेकिन आपने परेशान नहीं होना. आपने समरी से एग्जैक्ट वर्ड्स को फाइंड करके उसके सिनोनिम्स को आपने फाइंड करना है पैसेज में से. इस तरह से आप इजीली आंसर्स को फाइंड कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask in comment section. Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell so you won't miss any new explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.